Hello friends, and today is a very important lesson. It's all about what you will say, the prepositions. So prepositions in French. Now, first of all, before going in the details of preposition in French, let us understand how would we define prepositions in English. Then we will try to understand the common and the basic prepositions. Now, prepositions are the words that tells the position. Now, position of what? Position of an object. Now, what is an object? Object is none but noun. So, preposition is nothing that tells you the position of noun. Maybe the two noun and how they are related. For example, if I say the pen is on the table. Now this on is showing the relation of pen and the table, right? These are two objects. How pen is related to the table? If I change the preposition, the meaning of the word would change entirely. So in English, they tell you the position. So prepositions can be the preposition of place, the preposition of position, of course the transition, or the preposition of time. In French, we have few important prepositions. Now, to understand the preposition in English and in French is quite different. So if you try to translate word by word the preposition from English to French, you will always land at the wrong meaning. So let us understand how the French people, they define the preposition. If you want to note down, you can note down. इसको pause करके आप note कर लीजिए. Now, in French, the most important preposition is this word. Now, I would put it the first preposition to learn. And how to spell this preposition? It is known as a. जो हम alphabet में a बोलते हैं ना, like in Hindi, I would write like this a. Now, the alphabet, this is also a. A का मतलब एक तो ये फर्स्ट अल्फाबेट हो गया, और वैसे अवा आपका जो वर्ब होता है उसका कॉन्जुगेशन भी होता है, तो इसका मतलब हैज भी होता है. But when you put the accent, it has got a different meaning. Now this means, यहाँ लिख देता हूं मैं, in, at and to. Now in, at and to, ये फ्रेंच के सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है आपके. और ये प्रपोजिशन कहाँ पे काम में आता है, दैट we would see. But before understanding this preposition, let us first do other prepositions. The second very important preposition is, you can write this avec. Avec का मतलब होता है with. The avec का opposite, it is sans, song. Song का मतलब होता है without. सॉन्ग का मतलब होता है आपका विदाउट. देन द मोस्ट कॉमन, आई एम ओनली राइटिंग द मोस्ट कॉमन प्रपोजिशन द. द का मतलब होता है ऑफ या फिर फ्रॉम. ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन दिस en. en का मतलब होता है इन और ऑन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो ऑन है और इन है, इनको देखो मैंने यहाँ पे इसमें भी लिया है और इन इसमें भी लिया है. नाउ फ्रॉम द एग्जांपल आई वुड ट्राई टू मेक इट क्लियर. और सिक्स्थ प्रपोजिशन जो आपको आना चाहिए वो है हु.
पूर्व का मतलब होता है for, और who का मतलब to be होता है, और पूर्व का मतलब in order to be होता है. So you can see that all these preposition, एक बार आप मेरे साथ इसको रिपीट करिए, रिवाइज करिए. आ, awake, saw, the, on and who. आ का मतलब आपका in, at, to. awake का मतलब with, saw का मतलब without, the का मतलब of or from, और this on is in or on. पूर्व का मतलब for, to or in order to. So these are the 6 prepositions that we are trying to understand today. If you want to write it down, you can pause the video and write down. Now we will try to understand the preposition using few example. So I am writing in French. सबसे पहले जैसे हम लेते हैं with का लेते हैं. So Akash is coming with Vandana. Now Akash is coming with Vandana. So here I am using this preposition with. Now is coming के लिए आपके पास verb कौन सा है? Venir, to come. और वैसे आप ये वाला verb भी काम में ले सकते हो, arrive. ये भी होता है to come और to arrive. Okay, so let me choose this verb because it is a regular verb, arrive. So how can I translate it? Akash. Now Akash is third person singular. Akash arrive. Awake, Vandana. So have you noticed that for with I am using this word awake. So you can make as many examples as possible. Let me write new example. Akshay is going to have dinner with Shivi. तो अक्षय इज गोइंग. तो गोइंग के लिए हमारे पास वर्ब कौन सा है? हमारे पास वर्ब है आले. आले का मतलब होता है टू गो, एंड यू ऑल नो द कॉन्जुगेशन. सो आई कैन राइट अक्षय वा. अब टू हैव डिनर, देन आई कैन यूज दिस वर्ब दीने awake Shivi. Now how simple it is to write in French. अब मैंने आपको विद का एग्जांपल दिया, तो मैं इसके साथ में आपको विदाउट का भी एग्जांपल एक दे देता हूं. I can write Radhika often speaks without listening. So Radhika often speaks without listening. Now how to write this sentence? So there is no change in the name, Radhika. Now when you are saying this often, in French it would always come after the verb. Now speaks, so
parle souvent. Now look at this word souvent. Souvent का मतलब होता है often. Without listening. So without listening, sans écouter. Right? So, Radhika parle souvent sans écouter. Radhika parle souvent sans écouter. Sans écouter. So I suppose you understand this example. If you want to write down, you can pause the video and write it down. Meanwhile, I can erase. Okay. Let us do few more example. For example, do, please bear with my handwriting. It's good at board, but it's getting better at computers. Do you work in order to earn a living? Do you work in order to earn a living? In order to, इसके लिए आपने कौन सा preposition use किया था? Pour. So do you work, and as I taught you, to frame question you can easily use est-ce que. Est-ce que tu est-ce que tu travailles pour, in order to, pour to earn का फ्रेंच में मतलब होता है गानिए, GAGNER, निए, दिस GN is निए, गानिए के दो मतलब होते हैं. पहला मतलब होता है टू विन और दूसरा मतलब होता है टू अर्न. ओके, सो est-ce que tu travailles pour gagner your living is your. तो हम ट्यू में बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ta vi. Est-ce que tu travailles pour gagner ta vie? Est-ce que tu travailles pour gagner ta vie? Right? Let us take another example. I like to travel alone without friends. Like, I like to travel alone without friend. Now I like to, so you know, इसके लिए बहुत common word है हमारे पास, j'aime. Now j'aime to travel. So voyager. J'aime voyager. Alone is seul. J'aime voyager seul. Sans amis, without friends. J'aime voyager seul, sans amis. So these are few of the examples that helps you to understand the preposition. Now let us move further to understand the next preposition that creates a lot of confusion. So once again, if you want to write, you can pause it and write down. Now the next important preposition is en, on. Now it is often used in fixed expression of, you can say, fixed expressions of space and time. So the fixed expression of space and time, and it's best to learn each expression as a whole.
जैसे हम बोलते हैं, आप इसको समझो, वी आर इन द क्लास. नाउ we are in the class this morning. Now the fixed expression of space and time, space भी है और time भी है, तो यहाँ पे आप इनमें अगर don't लगाते हो, so I'm not saying it's wrong, but the most appropriate is on. So we are in the class, you can write nu som, we are, तो हमेशा som आएगा, nous sommes en classe this morning ce matin. Okay, for example ये वाला एक्सप्रेशन बहुत कॉमन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे. she is late, और अगर अर्ली है तो अर्ली भी. ओके, तो आप इसको हमेशा आप बोलेंगे एल ए retard, en retard, to be late, être en retard. देखो जो एक्सप्रेशन है आपका वो है être en retard, और इसी तरीके से to be early, être en avance. Okay, so elle est en retard, elle est en retard. In the same way, if she is early, you can write elle est en avance, she is early. So जैसे आप सीजन्स के बारे में बोलते हो, तो वी ऑफन डू स्कीइंग इन विंटर और वी स्की इन विंटर. सो वी स्की इन विंटर. ऑन स्की, अगर मैं इसको वर्ब की तरह लेता हूँ, सॉरी एन नहीं आएगा, ऑन स्की, ऑन नी वेयर, ऑन नी वेयर. Why I'm taking the example of skiing? Because it's a common sports in French. So I suppose this is clear to you, and when you use this इसके और भी बहुत सारे use होते हैं, but first of all let us fix ourselves to this use of Now the next important thing after this on is to understand the preposition. What should I do? Should I take another slide? Okay, so if you want to note it down, you can pause it, note it down, and I erase all. Let us try to understand the preposition of a and the, to, from. देखो जो आ प्रपोजिशन होता है ना, ये वाला, इट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन. दिस आ प्रपोजिशन इज यूज्ड टू indicate. And what does it indicate? To indicate a location. लोकेशन हो सकता है कोई, यू कैन से डेस्टिनेशन. और किस कंटेक्स्ट में हम इसको यूज कर रहे हैं? इंग्लिश में अगर हम देखा जाए तो जैसे लोकेशन के लिए एट भी यूज करते हैं, इन भी यूज करते हैं, और टू भी हम यूज करते हैं. और इसके साथ एक चीज और आप याद कर लो, एंड इज ऑल्सो यूज्ड विथ cities.
नाउ सिटीज के साथ कैसा होता है, जैसे आप बोलते हो आई लिव इन अजमेर, सो यू कैन राइट जावेद आ Ajmer. So I am using this preposition a. जैसे they are going to the bank. They are going to the bank. So you can write L vont à la banque. À la. Why à la? Because bank is feminine, right? So it is in both the sentences you have seen that we are describing a location. Here when I am using a, it is also describing a location. Here this to, it is also a destination. So I suppose you understand. या जैसे जैसे is Hina at home? Is Hina at home? How to write? Use the same simple method. Est-ce que Hina est à la maison? Est-ce que Hina est à la maison? So I suppose you understand. If you want to note it down, you can note down. Now this still it is not over. We need to understand it in a little bit more detail. Now, for example, the meaning of to or for before an indirect object, that is usually for a person or for a pet, you can freely use a. For example, you give a pen to Srishti, right? Now give don, so vous donnez un stylo à Srishti. So you notice how simple it is. For example, he asks Vartika for the number. So ask demande, il demande Vartika. या इसको वर्तिका को अभी मत लिखो. Il demande le numéro à Vartika. This is how the French people would write. देखो इसमें एक चीज मैं आपको और समझाता हूं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जब आप यूज करते हो तो उन वर्ब्स को जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में लगाते हो तो आप उन वर्ब्स के साथ में आ लगाएंगे. वो वाले वर्ब्स आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने ऊपर जो वर्ब लिखा है सबसे पहले यही वाला वर्ब ले लेते हैं.
demande. Now, you will always write demande a. It means to ask for. Okay. और वैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में donner a, तो to give to. ओके और इसमें आप ले सकते हो montrer a. Now what is montrer? To show, to show to. ओके ऐसे कॉमन वर्ब्स में आपका आ जाएगा पार्ले आ. पार्ले आ का मतलब होता है टू स्पीक टू. अब टू स्पीक टू तो répondre आ, तो répondre का मतलब होता है टू आंसर टू. टू आंसर टू. आप चाहो तो इसकी जगह ये भी कर सकते हो, इसी से मिलता जुलता है टेलीफोने. राइट. नाउ टेलीफोन इज इन इंग्लिश, दिस इज टेलीफोने. टेलीफोने आ. तो टू फोन, टू या टू or to. For the students of A1 and A2, I suppose these examples, they are more than enough. These verbs to understand and to know these verbs are enough. Let us do few of the example. जैसे the teacher shows the lesson to the students. Now, le professor. Students, please remember that when you say the teacher is masculine and feminine. But you will always use this la before the professor, because जो मैंने nouns, gender of the noun की क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि there are few words that have got its own gender, so you are not free to change the gender of those verbs. So how can I write le professeur to show montre la leçon. Leçon is feminine. La leçon to the students. तो to the student, अगर हम एक ही स्टूडेंट की बात करें तो to the student, तो आ, अब la étudiant, it's a girl student, that's why I'm using a la étudiant. Now जब मैं इसको आ ला étudiant लिखता हूं तो मुझे इसको étudiant ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आ l'étudiant. Le professeur montre la leçon à l'étudiant. So it's very simple. Now I suppose you understand the most use of the preposition a. Now let us do and finish this lesson understanding the use of the preposition the, जिसका मतलब मैंने बताया था of या from. Okay, first, should I change the slide? We can do it here. The first of all, this preposition the is used to tell indicates where someone is coming
from. ओके, जैसे इज सलीम फ्रॉम दिल्ली, तो एस्का सलीम, नाउ एस्का सलीम ए द Delhi. So very simple. Let me take another example. For example, you can say we are coming from Jaipur. We are coming New Veno the Jaipur, or nous arrivons de Jaipur. Okay, the second most important use of the is to express what you call second use, to express what is known as possession. Possession वो होता है ना, possession और belonging. Okay, जैसे हम बोलते हैं here is Rashi's pen. Now here is an expression, voici le stylo de Rashi. So when you say na in English Rashi's pen, in French it is stylo de Rashi. So what they say, pen, this pen of Rashi. This is how the French people would say. Okay, जैसे third use, when you use it for the you can say as a description, right? जैसे the French teacher, तो फ्रेंच में वो बोलते हैं द टीचर ऑफ फ्रेंच, ल प्रोफेसर द फ्रांसे, द प्रोफेसर द फ्रांसे. जैसे द स्टूडेंट्स लाइफ, so la vie d'étudiant, la vie d'étudiant. Okay, so these are the basic prepositions, the prepositions that we try to understand. The prepositions like avec, like sans, very important preposition. Then we have the preposition en, this en. Then we have this preposition pour. Then we have this preposition a and the. So I suppose that the basic understanding of these prepositions is clear to you all. These prepositions, they are very helpful for
both the levels, the level A1 of DELF and the level A2. But for the students of B1, for the revision, these prepositions, they are must. Thank you.